Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Key domestic stocks witness modest losses. Sensex closes at 60,822. Nifty settles at 18,115. And oil rises above $85 per barrel. घरेलू शेयर बाजार मामूली घाटे के साथ हुए आज बंद। सेंसेक्स 60,822 पर आया, निफ्टी 18,115 हुआ दर्ज और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे सत्र में आज बिकवाली तेज रही। हालांकि शुरुआती कारोबार में लिवाली का सिलसिला भी देखा गया। बाद में मुनाफा वसूली बढ़ जाने से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 102 अंक यानी 0.17% नुकसान के साथ 60,822 पर बंद हुआ। लगातार 4 सत्रों से सेंसेक्स में गिरावट का सिलसिला जारी है। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 63 अंक यानी 0.35% घटकर 18,115 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कहीं अधिक तेज रही। इनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.97% नुकसान के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.2% की गिरावट हुई। Sensex and Nifty today witnessed modest losses even as the global equity markets were positive. BSE Sensex fell 102 points or 0.17% to finish at 60,822. The NSE Nifty also slipped 63 points or 0.35% to settle at 18,115. In the broader market at the BSE, the mid-cap index also declined by 0.97% and the small-cap index tumbled 1.2%. In the Sensex pack, shares of 13 companies gained, while 17 logged losses. HDFC was the top gainer as it surged 2.1%, followed by Bajaj Auto, which gained 1.7%. Kotak Mahindra Bank climbed 1.2%, while Axis Bank and IndusInd Bank both gained 1%. On the other side, ITC plunged to 3.4% and Maruti declined by 2.1%. Infosys fell 2%, NTPC ended 1.9% down, and HCL slipped 1.5%. In sectoral indices, 15 out of 19 sectors logged losses. Realty climbed 2.5%, BankX surged 0.7%, and finance sector stocks gained 0.5%. On the other hand, metal lost 2.9%, basic materials declined 1.8%, and healthcare ended 1.6% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,327 companies gained, while 1,967 companies fell. Shares of 154 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 90 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.09% कम होकर 93.68 पर आ गया। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार मजबूती के साथ खुला था, लेकिन यह तेजी कायम नहीं रही। क्या प्रमुख कारण रहे? मनोज जी, आपने देखा कि कई सप्ताह से, पिछले कुछ सप्ताह से बाजारों में काफी तेजी का माहौल रहा है और इंडेक्स, लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, करीब करीब सभी विस्तारित बाजार में काफी हमने तेजी देखी थी। लेकिन इस सप्ताह हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और उसका खास अगर आप देखें तो खास तौर से उन शेयर्स में जो बहुत ज्यादा तेज
हो चुके थे, बहुत उनमें तेजी आई थी पिछले दिनों, जैसे आईटी सेक्टर के शेयर्स थे या मेटल्स हैं, या हमने देखा आईआरसीटीसी जैसे शेयर जो बहुत तेजी से बढ़े थे, वहां हमने देखी पिछले पूरे सप्ताह में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, और वही मेन कारण था मार्केट नीचे आने का। और खासतौर से अगर आप देखें तो जो मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं, अगर पूरे सप्ताह को हम देखें तो जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो करीब करीब 1% इस सप्ताह नीचे आए, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 5% उसमें गिरावट आई। तो ये बात साफ है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो मेन कारण रहा बाजारों में कमजोरी का। और साथ साथ हमने देखा है कुछ हद तक जो ये तिमाही रिजल्ट आए हैं सेकंड क्वार्टर के, उसमें जैसे एशियन पेंट्स का रिजल्ट थे वो थोड़े मायूस करने वाले थे, 30% गिरावट थी उसमें। इसी तरह हिंदुस्तान लीवर ने ये कहा कि उनके ऊपर कॉस्ट प्रेशर्स हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी कारण रहे हैं बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के। So at this stage, would you say the price to earnings ratio would be very relevant, the earnings per share, because the quarterly results are coming out. Infosys, for instance, is a bellwether stock and it fell today. Maruti is another stock that fell along with ITC. So you expect that maybe because of overvaluations, it will not justify the technicals and the fundamental results that would be declared very soon. So Arjun, price earning multiples right now, of course, are at the upper end of the range that we have usually. However, in India, PE multiples will change, because I think going forward for next at least 1 or 2 years, we will see a sharp upturn in earnings for companies. There may be some outliers like Asian Paints where cost pressures led to a decline in profits, but mostly we will see earnings for companies will rise. Therefore, PE multiples will obviously come down over the next couple of years. I don't think that is so much of a problem. I think what investors are really worried about right now is that the fact that inflation is going higher, which will continue to put pressure on margins for companies, and also valuations are already very high. They have run up a lot in the last 1.5 years. People are sitting on substantial profits, and some of them would like to take the money off the table for the time being at least. I don't think it's a long-term, I would say long-term trend in terms of selling, but for the time being, I think investors would like to take some money off the table and sit back and see how this pans out, and then probably come back to the markets. पुनीत जी, बाजार में पूरे सप्ताह में जैसा कि हम देख रहे हैं कि छोटी और मझोली कंपनियां अधिक प्रभावित हुई, यानी विस्तारित बाजार पर असर अपेक्षाकृत अधिक पड़ा है। पिछले 4 सत्रों में गिरावट, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही। ये दरअसल क्या दर्शा रहा? केवल मुनाफा वसूली है या बाजार की जो अपेक्षाएं रही हैं वह पूरी होती नजर नहीं आ रही? मनोज जी, देखिए, जहां तक लार्ज कैप्स की इंडेक्स की बात है, निफ्टी और सेंसेक्स, आपने कहा कि वहां पर बहुत गिरावट नहीं आई, लेकिन उसके अगले इंटरनल्स देखें हम, तो आपको हैरानी होगी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अच्छी बढ़त रही है सप्ताह में, जैसे बैंकिंग शेयर्स में और पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमने अच्छी बढ़त देखी है सप्ताह में। फाइनेंशियल्स में आज भी बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव, हमने निफ्टी में गिरावट देखी। तो अब मुझे लगता है तो जहां पर वैल्यू लग रही है इन्वेस्टर्स को, वहां पर वो भी फ्रेश पैसा डाल रहे हैं, और जहां उनको जैसे मेटल्स क्षेत्र में काफी बढ़त रही है, आईटी में बढ़त रही है, फार्मा में हमने गिरावट देखी, तो मुझे लगता है कि ये मनी रोटेट हो रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग करके वो नए शेयर्स में या नए सेक्टर्स में वो पैसा डाल रहे हैं। दूसरा, हमने ये देखते हैं कि जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स हैं, वहां पर क्योंकि लिक्विडिटी बहुत नहीं होती और म्यूचुअल फंड्स और बड़े इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी कम होती है, तो जैसे ही थोड़ा भी बिकवाली आती है तो वहां गिरावट ज्यादा आती है। तो ये मुख्यतः ये कारण रहता है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, और उसी वजह से हमने आज गिरावट देखी जो बाजारों में देखी। पर अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे अरसे तक ऐसा नहीं रहेगा। मार्केट्स में काफी अभी ऑप्टिमिज्म है और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छी है, तो शायद थोड़ी गिरावट और थोड़ी करेक्शन के बाद ये मार्केट्स में वापस इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बन जाएगा। We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We joined by Puneet Jain, market expert on our program Market Mantra. Puneet, once again a warm welcome to you. Invariably, there is always a call for small investors to book their profits, especially in a bull market. But would you say that with this type of retail participation, you have retail investors booking their profits and then changing their portfolio, moving on to another set of stocks in another sector? Do you think that's what's happening here? And do you think this is in sync with what the FIIs and DIIs are doing? Just looking at the way the market is being directional. So you're right. Small investors, usually a very large chunk of investors have entered the market who believe in making quick money, so they're trading the markets rather than they're not participating as long-term investors, and that is of course a bit worrisome. I would really prefer that investors, particularly small investors, should invest for the longer term because that is where wealth can be created. However, right now there is a large number of participants who want to trade in the market and make short-term gains. Of course, they keep rotating the money from one sector to the other, which they believe is a favored sector. So, like I said earlier, until a few weeks back, IT, pharma, metals, these were the sectors where the momentum was there, and investors thought that they could make quick money there or fast returns there. Now, of course, the momentum has shifted towards realty sector stocks, towards banking sector stocks, and that is where we saw buying happen today. So definitely retail investors who are now a very big force in this market. See, unlike earlier where FIIs and domestic institutions were really determining the trend, right now, at least for the present, small investors and retail investors are also are big influencers in this market, and they are also kind of affecting the trends. पुनीत जी, यहाँ पर क्या ये समझना हमें नहीं चाहिए कि बाजार को प्रभावित करने वाली जो बड़ी शक्तियां थीं, यानी कह लें कि जो FIIs थीं या इस तरह के बड़े फंड थे, उनकी तुलना में जो नए छोटे निवेशक आए हैं वो स्मार्ट तरीके से बाजार को ऊपर उठाने में या कह लें सेक्टर की चर्निंग करने में अपना योगदान दे रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा? ये कहना मुश्किल है। देखिए, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है। इनफैक्ट अमेरिका में हम देखते हैं रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स के नाम से ये एक टर्म चली है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बाजार में पैसा लगाते हैं और उसको बाजार के ट्रेंड्स को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वहां पर इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि जो नए एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, उससे काफी फर्क पड़ा है मार्केट में। लेकिन यदि आप मुझसे पूछे तो लॉन्ग टर्म में तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और FIIs हैं या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, देखिए यही लोग ज्यादा सस्टेनेबल इन्फ्लुएंस रखेंगे मार्केट के ऊपर। शॉर्ट टर्म में होता है ऐसा कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट के सेंटिमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में होना अच्छा है, पर जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट है इसके अंदर, डेफिनेटली उससे हमें थोड़ा चिंता है, लेकिन आई होप इट विल चेंज एंड दे विल बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। पुनीत, there was news about Reliance Industries declaring their results today, and that would have an impact on the markets, if not on Friday, but definitely on Monday, especially with their diversified conglomerate into retail, digital, and of course petrochemicals and petroleum products. Do you see that as a factor in today's trade? But there is no mention of the results being declared and its impact. So the results have not yet been declared. They're scheduled to be declared. Probably towards later in the later part of the day they will be declared. Of course, Reliance is the largest company by market cap in India. So they have a market cap of close to 15 lakh crores. And of course, it has the largest weightage also in the index. So the results will have an impact on the broader market sentiment. And today also, in fact, when the markets were going down, Reliance shares
they held their own. They ended in the positive territory for the day. So I think they do influence the markets at a macro level. But of course, there are many other sectors which are now important. Like I said earlier, banking, which is a very significant sector, not only in terms of market cap, but also in terms of its impact on the broader economy. I think that is becoming very important market determinant right now. So there are large number of other companies now whose results we are expecting. In fact, next week is going to be a very big week. You have results from ITC being declared, and large number of other large caps are being declared. पुरी जी, हम आपका ध्यान दो सेक्टर की ओर ले चलना चाहेंगे और पिछले 3 महीने के दौरान इनमें जो बढ़त या घटत हुई उस पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। एक है रियल्टी सेक्टर, जिसमें 2.5% की बढ़त हम आज देख रहे हैं। दूसरा मेटल सेक्टर, जिसमें 2.9% की गिरावट हम देख रहे हैं। यहां समझने वाला कह लें कि जो मूल मुद्दा है वो ये कि जो हाउसिंग कंपनियां हैं या कह लें कि जो रियल्टी सेक्टर है, क्या वहां पर वास्तविक रूप से कंपनियों के परिणाम बेहतर आ रहे हैं, मकानों की बिक्री से संबंधित आंकड़े बेहतर आ रहे हैं, या जिस तरह मेटल में हमने एक तेजी का सिलसिला देखा था पिछले कई सत्रों में, जिसमें मेटल दुनिया भर में तेज हो रहे थे, भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए रियल्टी और मेटल का यह आंकड़ा क्या कह रहा? अच्छा आपका सवाल है मनोज जी। पहले रियल्टी की बात करते हैं। तो रियल्टी सेक्टर में जो फंडामेंटल है, यानी करीब करीब जो उसके नंबर्स हैं, करीब 10 साल का हमने एक मंदी का पीरियड देखा है रियल्टी सेक्टर में। यदि आप उठा के देखें तो पिछले 10 वर्षों में रियल्टी सेक्टर के काफी चैलेंजेस रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल रहे हो, वो सेलिंग नहीं कर पा रहे थे अपने, उनका माल कम बिक रहा था। तो रियल्टी सेक्टर करीब 10 वर्षों की मंदी के दौर से निकल रहा है, और अब जो आंकड़े आ रहे हैं सेल्स के, वो बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमें वो सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन होगा। और काफी कंपनियां भी कम हो गई हैं, जो कमजोर प्लेस थी या कमजोर कंपनीज थी वो बंद हो गई हैं। तो कुछ जो चुनिंदा बड़ी कंपनीज हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और जो रियल्टी सेक्टर के शेयर्स थे, ये भी पिछले 10 वर्षों में, हालांकि काफी हमने तेजी देखी मार्केट्स में, रियल्टी सेक्टर के शेयर्स में तेजी नहीं आई थी। तो मुझे लगता है वो एक ट्रेंड रिवर्सल है, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है रियल्टी सेक्टर के लिए। और आज हमने देखा जैसे सेंटिमेंट थोड़ा वीक था मार्केट में, उसके बावजूद आज रियल्टी सेक्टर में इन्वेस्टर्स की बाइंग थी और उसी वजह से इंडेक्स ऊपर था। मेटल सेक्टर में अगर आप देखें तो जो रिजल्ट आए हैं कंपनी के, वो अच्छे रिजल्ट आए हैं। JSW स्टील के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, जो बड़ी मेटल कंपनी है सबके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने वहां पर बिकवाली देखी। उसका कारण यही है जो हमने पहले डिस्कस किया कि काफी प्रॉफिट आ रहा है, शेयर डबल ट्रिपल हो गए हैं पिछले 1 वर्ष में, और इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब ये प्रदर्शन जो है कोई यहाँ से बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा, ये मेंटेन होगा, और वो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर रहे हैं। तो मेटल सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग चल रही है शेयर्स में। रियल्टी सेक्टर की परफॉर्मेंस बेहतर आ रही है, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और इस वजह से उम्मीद में ये शेयर्स अब बढ़ रहे हैं। Finally, you mentioned about the banking sector quite a few times earlier. The bank Nifty is 40,300, and we also have a bank like Yes Bank in the private sector. The second quarter results have gone up by 74% year on year, yet the share price has not gone up. How would you advise the investors who are looking at the results turnout for private banking and PSU banking? So, Arjun, last 2-3 days we have had a number of banks declaring results. In public sector space, we had Bank of Maharashtra and IDBI Bank declaring the results yesterday, which were phenomenal on 2 accounts. One, profits obviously went up a lot. Also, the NPAs. In case of Bank of Maharashtra, the NPA, the net NPA is now down to 1.7%. So, practically they have reduced their NPAs to 0. So, PSU banking space came out with very good results, and the stocks have been showing strength. But I think they have a long way to go. In private sector, Yes Bank came out with very good results. They had a 74% jump in profits. But again, there are a lot of challenges with Yes Bank which are still there. For example, they still have to clean up their books. The NPA ratio is still very high. In fact, they've been talking about floating in ARC and then shifting the NPAs there. So all this is, I would say, work in progress. But broadly, I would say that banking sector is looking very good. And I think coming couple of years, we are going to see big improvement in the working of banks as well as, I think, the stock prices.
श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में हो हंसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज कुल मिलाकर तेजी बनी रही है। चीन में एवरग्रांड समूह की ओर से डिफॉल्ट को रोकने के लिए बॉन्ड भुगतान किए जाने का अन्य एशियाई बाजारों पर अनुकूल प्रभाव आज दिखा। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% की गिरावट हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.3% लाभ में रहा। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.4% की बढ़त हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो प्रमुख बाजारों में वहां समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.6% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.9% की वृद्धि थी और फ्रांस का CAC 40 1.1% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the U.S. stock market, the Dow eased marginally yesterday from a record high hit in the previous session as IBM shares fell after its quarterly report. Investors remain cautious over the potential impact of supply chain disruptions and labor shortages. However, the S&P 500 and the Nasdaq logged modest gains. The Dow Jones ended in the red but flat, while the S&P 500 added 0.3% and the Nasdaq Composite Index climbed 0.6%. Experts said investors are keeping a close eye on growth outlook from companies facing rising costs, labor shortages and supply chain constraints. Puneet, now we have your analysts who are looking closely at companies in terms of these factors affecting their growth. It appears to be a similar story as to what's happening in the US and what's happening in India. Absolutely. In fact, in US also, the concerns are that inflation is now putting a lot of pressure on margins for companies. And therefore, we see material companies, manufacturing companies facing some pressure in terms of selling by investors. Who earlier the US Fed was saying that inflationary pressures are transitory and by year end, these pressures will go away. However, it seems that these pressures are persisting. And therefore, there is this pressure on investors that they believe that it is better to be cautious. In fact, if you see, gold prices have been rising very sharply in the US in anticipation of this inflation. So largely, it's the same story across the world, where material prices are going higher and companies are facing margin pressures. Well, let's have a look at another commodity where prices are going up, which is oil. Oil prices today stayed near multi-year highs with concerns about tight supply and stockpiles fueling bullish sentiment. The crude prices rose more than 1% to trade above $85 per barrel level. In intraday trade, Brent crude was trading around $85.20 per barrel, while WTI crude prices were at $83.40 per barrel. Speaking of inflation and the systemic risk that a rise in fuel prices brings into the global market, how do you see this being arrested, especially with OPEC and OPEC Plus planning to conduct a meeting in January to decide on supply cuts? So, Arjun, clearly OPEC Plus, which is OPEC Plus Russia, is manipulating the oil markets. In fact, Saudi Arabia's oil output for the last month was much below the target. So they're talking about increasing output, but actually they have been reducing output. Of course, they are trying to manipulate and push the prices higher. There's no doubt about it. However, I think big buyers like Russia, and, like China and India has also talked about releasing oils from the strategic oil reserves. China was already also talking about the same
strategy where they want to release some oil from their strategic reserves. So clearly, the consumers will put pressure on producers that if they continue to manipulate the market so much, then probably consumers will have to take some steps. Right now, of course, they're under pressure because short term you can't change the dynamics. But I think longer term oil market will be hurt if prices sustain at these current levels. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 310 रुपए बढ़कर 47,710 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी 670 रुपए उछलकर 65,680 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़ा है। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में इसके दाम $1,794 प्रति औंस पर पहुंच गए। चांदी अंतर्देशीय कारोबार में $24.40 प्रति औंस पर पहुंच गई। पुनीत जी, आपने अभी जानकारी दी कि मतलब सोने के दाम एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम इस बिंदु पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि निवेश सलाहकारों से डिजिटल सोने का लेन देन आम लोग ना करें। इन दोनों का तात्पर्य क्या हुआ? देखिए, जो एक्सपर्ट्स एडवाइस दे रहे हैं ऑन डिजिटल गोल्ड या डिजिटल करेंसीज, उसको सेबी रोकना चाहती है क्योंकि वो उसके ऊपर एक्सपर्टीज उनकी नहीं है उतनी, और वो क्योंकि आजकल बहुत स्पेकुलेटिव एक्टिविटी चल रही है इसमें डिजिटल एसेट्स में, तो उसको रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है अच्छी चीज है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोने की आपने बात करी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इस वक्त जो सोने की कीमत $1,800 से ऊपर चली गई है वहां पर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में। और मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसकी आशंकाएं ज्यादा हैं, वो भी गोल्ड को आने वाले समय में बढ़ाएंगी। तो मेरा अपना अनुमान यह है कि जब तक ये इन्फ्लेशन की कंसर्न्स कम नहीं होते, गोल्ड में मजबूती बनी रहेगी और मुझे लगता है कि ये रेट्स अभी और आगे जा सकते हैं। Puneet, speaking about the hedge against inflation, which is why the precious metals market has gone up like gold and silver, do you see money being diverted from the equity and bond markets into the precious metals market now, and a possible cooling off in the equity market? Do you see that as a possibility with the rising oil prices and commodity prices going up? Very briefly. So, Arjun, usually whenever we see oil and gold, particularly gold going up because of inflation fears, there is a risk of trade. So, typically equities go down. It is not as if the money gets diverted from equities to gold. That is a huge amount of money. It doesn't get diverted so much. But as a temperament, gold going higher means risk off, which means equities will cool down a little bit. बस यहीं पर पुनीत जी, श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी। एंड श्रोताओं को बस ये जानकारी दे दें कि कल हमारा और परसों दोनों दिन फोन इन कार्यक्रम हुआ करेगा, उसमें भी हमारे श्रोता भाग ले सकते हैं। And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic stocks witness modest losses. Sensex closes at 60,822. Nifty settles at 18,115. And oil rises above $85 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.